Okay, so first of all, we will see today general introduction of Ansys Fluent, how to do all the setups. Okay, what will be the settings, which all uh, uh, formula and methods we have to select for getting good results. Okay, so we will see general understanding of the CFD process, Fluent interface, how Fluent looks, everything, how to run, then setup of the CFD simulation, materials, selecting boundary conditions, flow accuracy, how to get exact flow, then heat transfer, that is main topic of today's intensive training. And UFD also we will see little bit how to set up UFD functions. Then this multi-phase combustion dynamic mesh we will not learn, and post processing, how to obtain the results. Okay, so Ansys, as we know, there are many products in Ansys, not only the Fluent. There are mechanical APDL interface is there, CFD Ansys is there, ICEM CFD is there, Auto Dynamic Solver is there, then Ansys LSDNA is there. We will concentrate mainly on Fluent. So to run the Fluent through Ansys, we have to open the workbench. Okay, we have to open the workbench, then the Fluent will come. You can double click on this Fluent or you can drag it here. Hello, you are able to listen? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. okay. If I ask something in between, anyone can answer, single person. Okay, ठीक है Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो ये फ्लुएंट विंडो इस टाइप की दिस फ्लुएंट विंडो विल कम इन दिस प्रोजेक्ट स्पेस फ्लुएंट इज रिटर्न सेटअप सॉल्यूशन it will come also now two more things will come if you have to set geometry, make a geometry and meshing. So two more window will also come here in this fluent setup. Also you can run through command prompt, can go and answers folder and you can select the fluid dynamics and their fluent exe is there, you can run from here also. Okay, now next, when fluent will open, it will ask for these settings, dimension in 2D or 3D. Other important setting is parallel processing options, serial way or parallel. And to get accurate result, there is one option called double precision. You have to tick this option so that accurate result, if you have to publish paper or something very, for that this will be helpful. Just a minute, I will be- Okay, so 1 second. So this double precision option is there, and this I will tell you the advantage of this processing option, serial or parallel. This is also there. You have to select 3D, double precision, and for our course serial. Okay. Then there is also a setting path to from where you can take the any drawing or something you want to take. There is a path you can set here. That is not required. Third, when all the setting after that the fluent will run and this type of window will come. Here all the problem specific setup is there, what you have to do, and here the figure will come and general setting option will come here. Okay, I will tell you one by one what all you have to do and what are the advantages of doing all these settings. How you can get correct result with the fluent. So first of all, CFD might have Dhruv sir had been told.
CFD is a science of predicting fluid flow, heat, mass transfer, chemical reactions, okay, and other phenomena related by solving mathematical equations. So main basic equation what we will solve is conservation of mass, momentum. If temperature is there, heat transfer, so we have to run conservation of energy. Conservation of species is not required, that is for chemical reactions, and body forces, gravity or some force are there. So you have to take this also in the results. Analysis of results is very important. So for that redesign you have to do or something settings you have to do. So CFD का फायदा analysis, testing experiment at low cost and effort. You can test through Ansys. Now, how CFD works? CFD works on control volume. Okay, this control volumes. So basically, we solve this equation for unsteady flow. There is a term. This term is there. Convention term is there. Diffusion term is there, and if entropy generation or something is there, this term is there. So we will solving this equation for every control volume. So we will get information in all the control volumes and the fluid inside that. Okay, so basically it is discretization of our domain into a fixed control volumes. This partial differential equation we are going to solve. This is all solution is taken care by the Ansys programming. We just have to provide the parameters. Okay. Yes, sir. समझ में Yes, आ sir. रहा है या मैं तेज जा रहा हूँ या कुछ और प्रॉब्लम? जा रहे हो आप? हेलो, चलते रहो सर, बताइए। हाँ समझ में। ठीक है. तो CFD modeling overview. This is the problem. This much setup we have to do. First, we have to identify the problem. Okay, goals क्या निकालना है हमें, ये सबसे पहले जानना पड़ेगा. टेम्परेचर निकालना है या वेलोसिटी निकालना है, प्रोफाइल निकालना है. फिर डोमेन किधर पे निकालना है, क्योंकि अगर बहुत बड़ा सेटअप है, पूरी कार है, उसके किस पोर्शन में निकालना है, एग्जॉस्ट में निकालना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द डोमेन. You cannot do modeling for whole car. Okay, then we have to do pre-processing. For that we have to make the geometry. Meshing we have to do. Exact meshing is very important. Correct meshing is only will give the correct result, otherwise there all results will be false. Physics you have to set up the physics boundary conditions. Solver settings, solve करना पड़ेगा, ये run, you have to run the iterations. Then post processing, you have to examine the results, it is correct or not, and how to get the results. We will see one by one all these things. First, I define the goals. So first we will see find out what we have to find out. According to that, we will model our geometry, pressure drop, mass flow rate, or how we are using simply assumptions like symmetry, periodicity. Symmetry means the geometry symmetry we will do one part only in the simulation. No need to do for other parts, because this is very time consuming process. So as number of meshes will be less, it is good for you. Also system requirement is very important. If the big model is there, it will not run in normal system. You have to need a RAM of around 100 GB or something like this for bigger or larger mesh systems. Okay, degree of accuracy you have to see how quickly you need results. So accordingly we will draw and we will make our geometry. Then CFD
tool is correct or not, you have to see. All these things we have seen, then we will identify the domain. Now, if all these things are there, we have to select means where we want to analyze our results. So if this is our area of interest, we cannot model everywhere. We will see only this portion. So we will do meshing all this portion. So we will isolate this point from other geometry. Okay. Or we can do in 2D also if simplified assumptions are there to convert this 3D object in 2D. Then geometry, we have if this is the our part, this is our original CAD part. So fluid is flow from inside, then no need for bolts. Or we have to simplify the geometry as simple as possible. If fluid region is our area of interest, we have to extract the fluid domain. It will be like this. We have to make the fluid domain in Ansys. I will show you tomorrow in software if possible. Then no need for other bolts and all these parts. We will go for fluid domain only. Okay, so geometry as small as you can, make use of symmetry and periodicity. If something is changing, revolving pan is there, then periodicity boundary condition we have to use. Symmetry is there, so we will use symmetry boundary conditions. Like this, we will simplify our model and we will proceed. Then meshing. Meshing, the mesh generated will be of different shapes like triangle, quadrilateral, tetrahedron, hexahedron, pyramid shape, prism, or vase. But all the mesh, these shapes are not good. The best mesh will be hexahedron. This hexahedron shape mesh gives good results, and also less number of mesh elements are required as compared to trigonal, tetrahedron, triangle, or quadrilateral. Okay, but getting mesh of hexahedron shape is very difficult. You and complicated also. For simple geometries we can get hexahedron, but for complicated geometry we have to use all the elements, mixture of these elements. Okay, so number of uh, meshes depends upon the cell models, computer resources. Okay, all these things we have to take care. Meshing. Now, difference between quadral, hexahedral meshes and trigonal and tetrahedron meshes. Now, quadrilateral and hexahedron meshes are good. They are flow aligned meshes as shown in figure, and with less number of fewer cells and nodes we can get good result as compared to tri and tetrahedron. So we have to make sure that our mesh which is generated is of maximum of hexahedron and quadrilateral shapes. Okay, so more efforts are required to generate this mesh. Okay, are you getting, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हिंदी में तो नहीं बोलना है, कोई प्रॉब्लम? सर थोड़ा बाइलिंगुअल बोल दो सर। ठीक है। ओके, और कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर हमें प्रॉब्लम जो नहीं सर। ज्योमेट्री बनाना है, जो मैसेज जनरेट करना है, मैसेज में बहुत सारे ऑप्शन है मैथ सेटिंग में। वो ऐसा करना है कि वो मैथ जो हो वो हेक्साहेड्रॉन शेप्स की जनरेट हो, अलाइंड। इसको स्ट्रक्चर्ड मैथ भी बोलते हैं। इससे रिजल्ट बहुत कम मैसेज में एक्यूरेट आते हैं एज कंपेयर टू ट्रायगोनल और टेट्राहेड्रॉन मैसेज। बट कॉम्प्लिकेटेड केस में इस टाइप की मैथ जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। यू हैव टू गो फॉर मिक्सचर हाइब्रिड मैथ।
सपोज ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है कार की, पूरी कार को इनने मैश किया है, तो हम इसको एक ही शेप के मैसेज में मैश नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मिक्सचर ऑफ मैसेज, हाइब्रिड मैसेज चाहिए ही पड़ेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं, वेजेस और इसके आसपास हम ऐसी मैश जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैश जनरेट हो, जैसे यहाँ पर। और अदरवाइज, और अगर दूसरी जगह पे ट्रायंगुलर और दूसरी शेप्स की मैश अनस्ट्रक्चर्ड चल जाएंगे। ओके। हाइब्रिड मैश क्विक टू जनरेट है, इजी है एज कंपेयर टू फ्लो अलाइंड हेक्सागोनल मैश। नॉन कन्फॉर्मल मैश। नाउ अब एक पूरा ऑब्जेक्ट अगर एक ही है तो हमें कन्फॉर्मल मैश ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, एक जैसी, कुछ करना नहीं। पर अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं उसके तो हमें नॉन कन्फॉर्मल मैश की जरूरत पड़ती है, जिसको हमें इंटरफेस के थ्रू पेयर करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें जो मैश जनरेट होगी वो कन्फॉर्मल ही होगी। तो अगर ये इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड शेप है जिसमें यहाँ कंप्रेशर है, स्क्रॉल है, तो फिर इसके लिए नॉन कन्फॉर्मल मैश की जरूरत होगी इस टाइप। ओके। तो हमारी ज्योमेट्री बन गई, मैश बन गई। मैश हमने फ्लो फ्लो अलाइंड स्ट्रक्चर्ड मैश ली हेक्साहेड्रल एलिमेंट्स के थ्रू। ज्योमेट्री हमने सिंप्लीफाइड स्मॉल ली, सिमेट्री है तो बहुत आधी स्मॉल ली, जितनी छोटी हो सकती है। मैसेज भी हमने अच्छी क्वालिटी की, लेस नंबर, जितना हो सके ली, कोशिश की उसको लेने की। अब आगे देखते हैं फिजिक्स। नेक्स्ट तो उसमें हमें सेटिंग्स में फिजिक्स उसकी सेट करना पड़ेगी। जो भी सॉलिड हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, अगर मिक्सचर है तो उसकी प्रॉपर्टीज़, और बाउंड्री कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन, इनिशियल वैल्यू, टेम्परेचर कुछ होगा फ्लूइड का, विस्कोसिटी होगी उसकी, ये सब देना पड़ेगा हमें। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होगी, वो सब सेट करना पड़ेगा। सॉल्वर कंट्रोलर डालना पड़ेगा, और कन्वर्जेंस मॉनिटर। तो ये देखते हैं वन बाय वन वो कैसे करते हैं। लास्ट में कन्वर्जेंस हमारा रीज हो रहा है कि नहीं, मतलब जैसे जैसे इटरेशन बढ़ रहे हैं हमारा, अगर रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है तो इट विल बी कंजर्व, नो नीड टू गो फर्दर इटरेशन। ओके। सो वी विल सी कन्वर्जेंस इन lateral side slides, how to see. Okay. So all these things we will see. फिर पोस्ट प्रोसेसिंग, हम रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट करेक्ट आया है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू हमारे लिए जैसा आना चाहिए। जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो हम वो रिजल्ट चेक करके फिर से इसको सेटअप को चेंज करेंगे और फिर से रन करेंगे। तो ये अपडेट प्रोसेस चलती रहेगी यहाँ से। रिजल्ट देखा, फिर सेटअप हमने चेंज किया, मैथ चेंज किया, फिर रन किया, फिर रिजल्ट्स देखे एक्यूरेट आ रहे हैं कि नहीं। ओके। उसके लिए ये टूल्स हैं, ये फोर्सेस, मूवमेंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये सब, वॉल्यूम, क्वांटिटीज, ये सब, फ्लक्स बैलेंसेस, ऑल दिस वी विल चेक। तो मैंने बताया जैसे बाउंड्री कंडीशन, ये वो चेक करेंगे हम करेक्ट है कि नहीं। फिजिकल मॉडल अनस्टेडी का तो नहीं है, लेमिनार फ्लो का है कि टर्बुलेंट फ्लो का है, कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, 3D इफेक्ट्स तो नहीं है, मैथ एक्यूरेट है कि नहीं, ऑल दिस थिंग्स वी विल सी। If results are not good, then we will update the model. If good, then we will consider this as a final result. ओके। अभी तक का कोई डाउट? No, sir. ठीक है। Now we will start setup in Fluent software. Suppose this is the flow geometry hour.
फ्लो एक साइड से आ रहा है, दो साइड से इसका, एक साइड से इनलेट है, दो साइड से आउटलेट। ओके, सो ये मैंने बताया था कि जब फ्लुएंट खोलेंगे तो हमें ये सेटिंग मिलेगी, 3D की करना है, डबल प्रिसिशन हमें टिक करना है। और ये पैरेलल, अगर हमारा कंप्यूटर अच्छा है, जैसे 5 कोर है, 7 कोर है, तो वी कैन रन फ्लुएंट इन पैरेलल, so that result will come fast. Number of iteration means 4 iteration will run in 4 core processor at a time. So we will do this setting here. Here number of process we have to define in local machine. My mouse is visible, no? Mouse icon. Is Hello. not visible. Mouse is visible or not? Mouse. Yes, sir, it is visible. Okay. So this setting is required. 3D geometry is there. All these are default setting. Double precision for getting accurate result. And then OK we will press. Fluent will run. Okay, so this workbench will come when Fluent get opens. Here we will see this figure, mesh figure, and all the setup required will be in the left side, and their setting is in between. Okay, we have to do general settings, model, materials, boundary conditions, solver settings, initialization, post process. Okay, so in general, this window will come pressure based solver. We have to take or density based. uh, uh, आगे हम बताएंगे कि कौन सा यूजफुल है किस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, और भी देखते हैं settings। तो अगर जनरल में आया तो और भी कमांड है जो GUI से हम रन कर सकते हैं यहाँ पर। तो एंटर करेंगे किसी भी कमांड में जाके सॉल्व, ये हमें हेल्प से मिल जाएगा सॉल्व में कैसे जाना है। तो और कमांड जो भी है उसके अंडर में वो आ जाएगी और वो रन भी हो जाएगी इसके साथ। ओके, GUI कमांड ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। Then we have to set the scale, very important. Mass scale is an mm or micro mm. If it is in meter, geometry is very small, then we have to set in microns. Temperature in what units we want, we have to set. All these settings we have to do generally in MKS units. Okay. Next, we have to set the material properties. So next is material. After general, model is there. Model, I will tell you, if heat transfer, then we have to select the heat energy equation model also. Then we have to come in materials. Materials by default air will become and aluminum will become. You can edit from here and create new material also. Here is one button is there. Fluent database is there. From there you can select, or you know properties, then you can fill the properties here. Density, specific heat, thermal conductivity, viscosity. And you can create this change and create, it will create that material. Okay. This material we have to apply in cell zone conditions where which material is. Okay. So while making this mesh, we have to give the names of different inlet, outlet, or material wall, where is the wall and which type of material. It will show here in Fluent that. Okay, so in next bench here boundary condition, by default it will show symmetry, wall, chipboard. We have made chipboard, so here it will show all the things what we have defined in meshing. So then we have to accordingly we have to select, उस चीज को सिलेक्ट कर लो सिमेट्री है, और उसमें फिर हम बाउंड्री कंडीशन दे देते हैं। तो जनरली ऑपरेटिंग कंडीशन जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक होता है, वो यहाँ देना है, यहाँ से रहेगा ऑपरेटिंग कंडीशन। जब बाउंड्री कंडीशन का पैनल खुलेगा उसमें हम ये सब दे सकते हैं। ग्रेविटी अगर है तो ग्रेविटी यहाँ टिक करना है, उसका डायरेक्शन देना है यहाँ से, ठीक है। बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट ओके क्लिक कर दो।
The boundary condition we have to define inlet, outlet. So nozzle का inlet अगर inlet है तो 1, आउटलेट है तो 2, 3, 2 भी डिफाइंड है, वहाँ पे वो कंडीशन दी है। तो बाउंड्री कंडीशन कैसे हो सकती है? एक्सटर्नल इनलेट आउटलेट, प्रेशर इनलेट हो सकती है, प्रेशर आउटलेट, वेलोसिटी इनलेट आउटफ्लो, कंप्रेसिबल के लिए मास फ्लो इनलेट हो सकती है, सिमेट्री, वॉल, एक्सिस, पीरियोडिक। और इंटरनल अगर अंदर फैन वैन लगा हुआ है कुछ पाइप के अंदर तो वो इंटरनल बाउंड्री कंडीशन, कोरस, रेडिएटर, फैन। ओके, so these are the types of boundary conditions. नेक्स्ट, तो जैसे बाउंड्री कंडीशंस में गए, हमें आ जाएगा वॉल। उसको हमें चाहे चेंज करना है, वो इंटरफेस तो नहीं है, एक्सिस तो नहीं है, आउटफ्लो कौन सी है बाउंड्री, ये हमें यहाँ से दिखा सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, टाइप में गए तो इतनी सारी लिस्ट आ जाएंगी, उसमें से कोई सा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस जोन के लिए। इनलेट आउटलेट हम ये आ गया है जो हमने डिफाइन किया है। इंटीरियर के लिए कुछ नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है अगर एक लिक्विड है तो। बाकी चीज़ें देना है हमें, इंटरफेस और इनलेट आउटलेट। ओके, नाउ सर ये मटेरियल प्रॉपर्टीज के स्लाइड्स हो रही है, हाँ, प्रॉपर्टीज की स्लाइड शो हो रही है सर। अच्छा अच्छा, स्लो हो गया है क्या? 1 सेकेंड, प्रॉपर्टीज का ही हो रहा है। दिख रहा सर। अभी कौन सा दिख रहा है? सब मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी चेंज हुई? नो सर। ऑपरेटिंग कंडीशन, हाँ ऑपरेटिंग कंडीशन से हो रही है। हाँ हाँ, आ गई, ठीक है, तो फिर चेंज हो रही है ना? यस सर। हाँ, 1 सेकेंड। बाउंड्री कंडीशंस आ गया, अभी दिख रही बाउंड्री कंडीशन की? ये सर दिख रही है। ठीक, so boundary condition we have to set the velocity inlet. If we have given the boundary condition, we have to give velocity from here, the magnitude normal to the boundary. There are also settings for thermal, temperature and turbulence you can give from here or in this panel. Okay, you can define the UDF for this, for boundary condition, but for simple problem it is not required. Okay, you can give velocity magnitude in negative also, depending on the direction. Okay, negative. So velocity component you have to give magnitude, direction. If pressure inlet you are giving, then you have to give the total pressure at inlet. Okay, temperature you have to give, and these things, turbulence. Mass flow rate you are giving as an inlet, then you have to so momentum, this mass flow rate will come. Here you have to specify the value for compressible flow. So mass flow rate is more difficult to converge. All these properties there are is depending upon the boundary condition, their convergence and all these things are related. You can read from this. Okay. Temperature, direction, all these things you have to give. Then for outlet boundary condition, if pressure outlet you are giving, so generally
atmospheric होता है, you can give the gauge pressure 0 here. Okay, so no need to give any other things, only